Hello friends, today I have come to you people to discuss about means enhancement or enrichment program. So why is this program here? Firstly, there is a lot of confusion regarding prelims examination, whether I will clear it or not, whether I will clear CSAT or not. Definitely, the keys will be provided by UPSC. We don't know exactly what will be the cutoff. We don't know which questions will be doubtful. So definitely there is a huge spectrum of candidates with numbers ranging from 75 to 90 who are hopeful of selection. Of course, anybody above 90 is definitely, if they are clearing CSAT, is definitely into the list. But this spectrum of 75 to 90 are people who are very dicey right now. Dicey, even from 70 rather, not 75, 70 even. So because few questions go here and there, the keys of any institute, any person and the UPSC may differ. And 1 and 2 question means 4-5 numbers. So now from 70 to 90, so people who are lying in this range of 20 marks are people who are dicey, whether they should start writing answers, whether they should start preparing for mains, what should they do? My understanding of being with this examination for so long is that whether you are clearing it, whether you are not clearing it, you should start writing answers and preparing for mains. Why? Because supposedly you clear. If you clear this exam, clearing this exam means that you should start writing now, right now, because in mains there is a span of only 3-4 months, 3.5 months, and this time gets over like so quickly. So you must start practicing your answer writing both for GS and optional. And for GS also you should start gathering a lot of content that is required. So definitely those who are clearing needs to practice, enhance their skills and practicing of mains examination. Those who are not clearing it, supposedly you are lying in a quantum of maybe 65 or 70. Supposedly you lie here, you are not sure whether you will clear or not, or you are sure you will not be able to clear it. Then also if you are thinking that you will give another attempt, this means this time should be utilized for your mains preparation, and mains preparation means answer writing. So you will have to work on your answer writing, and after you prepare your mains, from December onwards you should dedicate yourself for prelims. So whether you are clearing prelims or not, start writing. This is first part. Second part, what is this mains enhancement program? So I call it a Shastra theory. Shastra theory means test series is practice. Test series means you are given a war kind of situation, a simulation, a war kind of a situation where you fight and see what have you done, like will you be able to fight in the real war. So it's like a simulation where you see whether you are competent enough, whether you are not competent enough, whether you can write or not. So this is a simulation of war, and mock tests, test series are the simulation. But before I send you, or before you go to a simulation or a mock test, are you ready? Are you equipped? That is the question. That is why so many students I see getting influenced by 40 mains test, 50 mains test, 35. This is mind-boggling numbers. It's not just about writing, it's also about improving your marks in each session or each test series. So what is mains enhancement program? From my understanding, it is, firstly, you should be given your shastras. Shastras means your equipments, talwar, bhala, all of these things. This in UPSC terms, data on all topics. Theme based one pagers. What is one pagers? Theme based one pagers. All the themes. Unemployment, one pager. Nothing else required. Climate change, one pager with all the conventions, all the data, all the schemes that are required, all the targets that are required to be put in answer, one pager.
Similarly, each thing, history, revolutions, one pager. Anything that has to be going in your mains examination, you should have just one pager, because you don't have to write essay there. There is a limited time space and you have to write an answer. So if you have one pagers, problem solved. So maybe 100, 200, 300 one pages, problem solved. So this should be there, data should be there. And then apart from this, schemes, other things like way forward, what is the government doing, what can be done. So all of these things we should have a what do you say, fact sheet. We should have all these things ready. This is like readying your shastras or your equipment or your sword. Second is skill. Skill means if I give you the sword but I don't teach you how to use it, very less useful. Very sharp sword, but not, you don't know how to use it, you don't know the techniques of using it, then there is a problem. So second is that you must know how to use all this information in your answers. And how to do it? Definitely that is the guidance part, how to use this information and integrate your answer, integrate your all these data and things into your answer to make it a very palatable, presentable thing. And third, apart from shastra skill, and then you go to practice equipped with all of this, equipped with everything, then you practice, because practice means that with each practice you should improve. So this is my take on my understanding of how you should prepare and enhance in your mains. At Tathastu, we are going to do all of this. You can also do it yourself also. It's not that only Tathastu can teach you this. You can do it yourself also. But if you need help, then definitely we are going to offer such kind of a program. Now let us take some questions. Can I see some questions, please? From the starting. Ma'am, is offline mode better or online mode for UPSC, please? From Kashmir. Both are good depending on your condition. If you can come offline, that is better. But if you are, if you are facing hurdles, if there is certain challenges at your place that you cannot come offline, then definitely online is better for you. Let's inspire. Ma'am, how to improve answer writing in UPSC mains? How to improve answer writing? Yes, this is a very brief pathway. We can also do a video with the elaboration. Ma'am, as I have not seen any drama from SOL background. No, there is no disadvantage from doing it from any university or a college. UPSC seeks quality, howsoever you get it. Next. Ma'am, okay, ma'am. Can you please say the benefits of offline and online mode for UPSC? Okay, I'll make a separate video on that, describing the offline and online benefits, etc. Because, it will again depend on your condition. Offline is not good for everybody and online is not good for everybody. We have to see your temperament, your challenges, your family condition, whether you can afford it or not. A lot of things are there. The things that, there are some people who are very disciplined. They can go, they can learn in online mode. They can sit on screens with patience, learn, write, and do all the practice. Then there are people who need that offline touch of a teacher, where the teacher is directing them directly. They are in touch with the teacher and asking doubts, asking questions. So again, it's a person to person subjective thing that is there. Yes. So if you have cleared mains, if you are from whichever stream, you can write mains. If you are getting same marks in test series, this means
there is, you have to work on this part and this part. You cannot skip this. So, you know, just practicing with limited skills and limited shastras or limited equipments, you will get the same marks because nothing is improving. You have to first improve this and then start practicing. Optional subject, how to choose, we have made a separate video for that. ओवरथिंकिंग पे कैसे कंट्रोल करें? ओवरथिंकिंग पे कंट्रोल करने के लिए इस पे कभी हम दोबारा बातचीत करेंगे बिकॉज इट्स नॉट एसोसिएटेड विद मेंस, बट डेफिनेटली इफ अ पर्सन इज ओवरथिंकिंग दिस मीन्स दैट you are not doing too much. If you are doing too much work, if you are busy in doing productive work, you will not be able to think. So first thing you can do is engage yourself in certain productive works. How to prepare for UPSC CSE after college? There are various means. You can start studying, you can do it as a self-study mode, you can join a support system where you can get the required guidance and content and practice. There are various modes there after college you can join. मैम ये तो हो गया, ओवर थिंकिंग पे तो बताया मैंने आपको. यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी. हाउ टू मेक योर आंसर्स मोर क्रिएटिव? यस, आंसर्स हैव टू बी क्रिएटिव. सब एक जैसे आंसर्स लिखेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा एग्जामिनर के लिए. यू हैव टू स्टैंड आउट टू show that you are a person who understands the subject, has a command over it and can write in a very well manner. Now this doesn't mean you have to make flowery diagrams or very elaborate flowcharts. No, it's very simple. If you see the copies of any toppers, you will find it simple as well as informative. So you have to have that understanding and clarity in your vision while writing an answer. Clarity is the key. कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द स्क्रैच past year question papers. So first you have to analyze past year question papers, go to PYQs, see what you would have written, see some model answers, see what was lacking. So then that can help you in improvement. How to compile all the contents in an essay? Yes, so that is what is known as lacking the logical flow in essay. So that's a very difficult task, but yes, very necessary. If you want good marks in essay or even in answers, you need to have a logical flow in your answer. Logical flow means दो लोगों ने कहानी लिखी, एक व्यक्ति ने कहानी लिखी, जो लिखी तो बिल्कुल सेम कंटेंट सेम कैरेक्टर्स, लेकिन मज़ा नहीं आया पढ़ने में. क्यों नहीं आया? कहीं से कुछ बात शुरू हो गई, कहीं पे ख़त्म हो गई, सर पैर सा नहीं बना, लॉजिक नहीं था, लॉजिकल फ्लो नहीं था. दूसरे व्यक्ति ने कहानी लिखी, सेम कैरेक्टर्स सेम कहानी सब, लेकिन उसने ऐसे बांध के अपने कैरेक्टर्स को रखा कि आपको कहानी सुनने में मज़ा आ गया. सेम विद आंसर. डेटा है, उसके बाद आपके पास स्कीम्स भी हैं सब, लेकिन उसके बाद आपने इस स्किल को यूज़ किया नहीं किया, आपने उसको लॉजिकल फ्लो में बांधा नहीं बांधा, कहाँ यूज़ किया, कैसे प्रेजेंट किया, कैसे हेडिंग्स बनाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Ma'am, what is the difference between a UPSC topper and the person who gets different ranks? Differences of few marks and definitely of maybe practice, maybe the kind of questions that were asked. So it's nothing very concrete we can say about that. Ma'am, क्या सेल्फ प्रिपेयर से CSE क्रैक हो सकता है? मुझे IAFS बनना है. बिल्कुल हो सकता है. सेल्फ प्रिपरेशन से क्यों नहीं हो सकता? अगर आप उतना मोटिवेशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन रखते हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन से बिल्कुल सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर हो सकता है. बट उतना ही प्रैक्टिस, उतने ही कंटेंट को कमांड लेकर आना पड़ेगा, तब आप बिल्कुल ऐसे लैक्स नहीं हो सकते हैं. Should we prepare for interview alongside mains if we clear prelims? First focus on mains because already time is very limited. The most limited thing a main student has is time. बहुत छोटा टाइम है, बहुत कुछ रिवाइज करना होता है, बहुत कुछ राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, तो टाइम ही सबसे कम है. तो पहले मेंस पे फोकस करें, उसके बाद आपको समय मिलेगा अपने इंटरव्यू पे काम करने के लिए. मैम, आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स. आई वांट टू प्रिपेयर फॉर CSE बट आई एम कंफ्यूज कि डिप्लोमा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर करूँ फाइनेंशियल सॉन्ग के लिए या फिर CSE. मतलब
मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। बेसिकली अगर आपको सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है तो आप साथ में कोई और डिग्री भी कर सकते हैं एज अ बैकअप प्लान। आप कोई जॉब भी कर सकते हैं, बैकअप प्लान होना कोई बुरी बात नहीं है, आपको स्ट्रांगनेस देता है। बट बैकअप प्लान इतना भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि आपका सिविल सर्विसेज की तैयारी से ध्यान हटे। तो ऐसा बैकअप प्लान होना चाहिए जो साथ साथ चलता रहे, लेकिन मेन फोकस ना बन जाए आपका। तो इसीलिए अगर आप डिप्लोमा करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, जो भी अब जॉब कर रहे हैं जॉब करें जैसे भी, लेकिन अपना मेन फोकस सिविल सर्विसेज को ही रखना है। मैम एनसीईआरटी आंसर राइटिंग में काम आता है क्या? हाँ बिल्कुल काम आता है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से लिखी जाती है कुछ एनसीईआरटीज, तो वहां से आपको वो फ्लो समझ में आता है। I'm a beginner, ma'am, so can you please tell me how to read newspaper and make notes from there? Divanjali Das. I will try to make a separate video for that because that will require, a completely separate kind of content. So we will open a newspaper here and try to read it and how you should read it. Ma'am, total how many papers are to be given for mains? So there are, in the main examination, there are nine papers, 4 GS, 2 optional and 2 qualifying language papers and 1 essay. So there are 9 papers that you have to give. How many hours of study? Hours में घंटों में अपनी पढ़ाई को गिनना बंद कर दें, क्योंकि घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति ने पूरे दिन किताब हाथ में रखी लेकिन पढ़े 2 पन्ने, एक व्यक्ति 1 घंटे के लिए बैठा लेकिन 10 पन्ने खत्म कर दिए। 10 पन्ने भी क्या, बल्कि उसने उस कंटेंट को कितना ग्रास्प किया। आपने पूरा दिन पढ़ाई करी, बहुत सारे पन्ने भी पढ़ लिए, लेकिन आपको याद कुछ नहीं रहा, आप उसे यूज नहीं कर पाए अपने आंसर्स में, कोई फायदा नहीं है। आपने 1 घंटा पढ़ाई करी लेकिन आपने उसको कैच कर लिया, यू ग्रास्प द बेसिक कंटेंट ऑफ द notes and you used it in your answer. You are much better than the person who is using full day for doing a little thing. Ma'am, apart from understanding the concepts, which part one should focus more to give a good answer? Presentation. How will you present your ideas? Articulation. You have to articulate your ideas in a manner जहाँ पे आपके ideas में एक clarity हो, एक focus नजर आए। तो you have to manage that, मतलब मेरा बड़ा, मैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल हमेशा मुझे बड़ा एप्ट लगता है कि ढाबे की दाल, ढाबे के अंदर दाल कैसी मिलती है? बहुत सारी मिलती है, लेकिन वो बहुत सुंदर तरीके से अरेंज्ड नहीं होती, इसलिए कितने रुपए भी मिल जाती है, 100 रुपये प्लेट, 150 रुपये प्लेट। रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, वही दाल 300 350 रुपये प्लेट। क्यों? थोड़ा सा और अच्छी सी कटलरी में रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश हल्का सा कर दिया, धनिया डाल दिया। और अगर हम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे ना, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के अंदर दाल आती है, ज़रा सी बाल्टी में या ज़रा सी कटोरी के अंदर आती है, लेकिन एकदम है ना क्रीम लगा के उसके ऊपर वाइट कलर से डिज़ाइन सा बनाएंगे, फिर एक धनिया से, अचानक से वो दाल कितनी हो गई? 800 रुपये। तो यानी 150 से 800 रुपये में क्या चीज़ बदल गई? दाल तो वही है, तो क्या बदला है? प्रेजेंटेशन, आर्टिकुलेशन, द वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। तो वही मेंस का हिसाब किताब है। आंसर में डेटा वेटा, तो ये जब चीज़ें हैं, ये एक पॉइंट है, लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? स्किल, दैट यू हैव टू वर्क ऑन। मैम सेल्फ स्टडी में आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर्स इवैल्यूएट कैसे करें? सेल्फ स्टडी में आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि हमें अपने आंसर्स के अंदर खुद गलतियां नज़र नहीं आती, हमें नहीं समझ में आता कि उन्हें कैसे इंप्रूव करें। इसके लिए आपको एक मेंटोर की, गाइड की, या किसी आपके, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू दिया है, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं कि वो आपके आंसर्स को देख के उसमें कमियां बताएं। अगर आपके कोई टीचर ऐसे हैं जिनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं, तो उनको आप अपने आंसर्स दिखा के चेक कराएं कि आपके आंसर्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। Is it enough if we prepare NCERT from YouTube or online material? This is one part. You can prepare NCERTs from any means, but you will also have to focus on utilizing the information of that NCERT first. Utilizing information means उसको याद करना, उसके नोट्स बनाना, उनके MCQs करना, उससे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आंसर्स में यूज़ करना। तो इट्स लाइक NCERT पढ़ना या उसके ऊपर एक वीडियो देखना एक पार्ट है। अगेन, अगर हमने सिर्फ वीडियो देख ली
नोट्स बनाए नहीं तो अगली बार ये याद तो होगा नहीं वो। रिविजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए नोट्स बना लिए लेकिन इतने लंबे बना लिए कि अब उनको रिवाइज करने का ही मौका कभी नहीं आ पाएगा, बहुत लंबा हो गया, ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इससे अच्छा। तो वो भी प्रॉब्लमैटिक है। आपने नोट्स छोटे बनाए लेकिन आपने उससे एसोसिएटेड एमसीक्यूज नहीं करे थे तो एप्लीकेशन नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। इज इट preparing? So Vinky Kashyap, I'm doing private job and preparing for exam, but my biggest challenge is to cover current affairs. Yes, current affairs is challenging for some people, some students, but I don't know why. Don't be, it doesn't have to be a challenge. Take one newspaper, read it, take few magazines. So you can follow magazine of X Institute and Y Institute. Read them end to end. Whatever is repeating, cancel it. Utilize the information that is there. Do some test series. Do some, model answers or MCQ answers. Write something on the basic core themes of current affairs. Gather the data, gather the information, prepare one page of notes and then use it. So definitely मेहनत है लेकिन उसके benefits भी बहुत है. The moment you prepare your current affairs, a major chunk of your prelims preparation and mains preparation is in command. मैम मैंने कोई आपने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा एक साथ कर ली, कैसे कर ली? नहीं, 2 डिग्रीज आप कर सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत. नाउ यू कैन डू 2 graduations टुगेदर. If your diploma is the one which can be offered after 10th or 12th, yes, you can do it along with your graduation. Now you can do 2 post graduation. So definitely अगर आपका वाला डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा नहीं है, अगर आपका वाला 10th और 12th वाला डिप्लोमा है तो आप कर सकते हैं उसे ग्रेजुएशन के साथ. Shri Ram, ma'am, I'm very inspired by you. Thank you so much. Be motivated and keep studying hard. Can we skip NCERT for CSE preparation? No, you cannot skip it. You have to do it. It's very, very important. Ma'am, my English speaking is not so good. I am good in writing answers in English, but when it comes to interview round, I am afraid of it. Don't worry. That's a different stage. First, focus on Diviraj Singh Chavda. First focus on your writing practice and clearing mains. So if you have cleared prelims, I'm feeling that you have asked this question, so maybe you have cleared prelims. So if you have cleared prelims, focus on your mains. If you have not cleared prelims, then focus on improving your interview preparation as well as mains. आपसे मेंटरशिप कैसे ले सकते हैं? वैसे तो ऑनलाइन यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं तो लिमिटेड मेंटरशिप वहाँ से भी आप ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आप पर्सनल अटेंशन के लिए सोच रहे हैं तो वी हैव तथास्तु हेयर. 2026 की प्रिपरेशन बहुत लंबा समय है लेकिन बेसिक बुक्स कवर कर लें. विक्रम, yes, there are separate batches, so let's inspire people. So there are separate batches for BA administration. While writing an answer, it is taking 8-10 seconds. Acha, 8 minutes 10 seconds, but while I am trying to write within 7 minutes, my handwriting becomes too bad. With practice, it will come. Don't worry. In some answers, you will have to take 7.5 minutes, and another answer which is more comfortable to you, you will take 6 minutes. So it will get compensated. Don't think too much about it. But the idea is that with practice, your speed will improve, your thinking abilities will improve, and your articulation abilities will also improve. So keep practicing. UPSC unpredictable है. Anything worth
your effort is definitely something which is difficult to acquire, and definitely it is unpredictable. Don't worry about that. Yes, you can keep SSC CGL as a backup and then prepare for UPSC. प्रीलिम्स में जो न्यू क्वेश्चंस का एलिमिनेशन मेथड इंट्रोड्यूस किया, पूरा जीनोसाइड कर दिया मैम इस ईयर मेरा। मैं एक वीडियो बनाती हूँ इस पे। जैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पेपर डिफ़िकल्ट था तो सबके लिए था, और अगर डिफ़िकल्ट था तो एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल, कट ऑफ नीचे आ जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगी, और वो वाले बच्चे सिलेक्ट करेंगे जो अपना काम रख के पेपर को डिफिकल्ट ना मान, मतलब देखते देखते हुए भी अगर उसने उसको घबराया नहीं, जो उसने अगर पेपर अपना लॉजिकल थिंकिंग के साथ करा है, तो मुझे लगता है कि पेपर डिफिकल्ट होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि कट ऑफ नीचे आ जाएगी। और क्या होगा, सिलेक्ट तो होंगे ही ना। जिन बच्चों को क्लियर करना है वो तो क्लियर करेगी, कोई तो बच्चा क्लियर करेगा ही। तो जीएस, हाँ सी सेट वाली प्रॉब्लम एक है, जहाँ पे सी सेट थोड़ा मुश्किल आया तो कई बच्चों का ऐसा हो रहा है कि उनके जीएस में मार्क्स अच्छे हैं लेकिन सी सेट क्लियर नहीं हो रहा। डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। Depends. Roman, it depends whether you want to make notes for current affairs or not. There are certain people who want to make their own notes, so you can use multiple sources and make your own notes. But if note making is taking too much time and you are writing too much in your notes, it's better to read from other sources, because taking time, cost benefit analysis, time is the currency. In UPSC, always remember, time is the currency. Time is the currency means it's money. You cannot waste it on things which are not important. How to manage timetable efficiently as a beginner? You will have to make some time for all the activities of your day. So if you are a person who is dedicating completely yourself to UPSC studies, so you can divide your day in 4 slots, and then you can out of these 4 slots you can mark one for optional, one for GS static, one for current affairs, and one for practice, something like this. MPPSC. So Srishti Pandey, ma'am, I have MPPSC mains in July. Please guide how I can score more in less time. Focus on these two. Ekdam concrete focus. Concrete focus means whatever is required in the answer, search only that, learn it and use it. नीचे जाए। Pankaj, ma'am, this is my first attempt and I feel depressed after giving my exam. Now what can I do to my 2024 exam? Why are you feeling depressed? It's okay. You prepared, but maybe your preparation was not enough. So prepare again. You don't have to be depressed. And if you are getting depressed just by one failure, think twice about giving UPSC again. Because for UPSC, you need to have a very brave heart. You have to be very courageous. बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, बहुत कम क्लियर करते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल हो ही जाते हैं अल्टीमेटली। तो इतनी मेहनत के बाद भी इंसान फेल होता है, तो इसीलिए या तो बैकअप प्लान रखें, नहीं तो मतलब बैकअप प्लान तो खैर होना ही चाहिए, और नहीं तो अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि अगर आपको हार मिली तो आप बहुत दुख में चले जाएंगे, आप डिप्रेस हो जाएंगे, तो इट्स बेटर नॉट टू गिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बिकॉज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर रिस्क बहुत है। उसको डिनाई नहीं करना चाहिए कभी भी। यू शुड नॉट बी इन डिनायल। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो यू शुड हैव दैट एबिलिटी कि कोई बात नहीं, आई विल स्टिल गो फॉरवर्ड।
Ma'am, I want to take admission in BA online from Tathastu, so you can contact the counseling team. फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बना लिया वीडियो के साथ साथ, तो इट्स वर्थ। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए, हमेशा सेकंड या थर्ड रीडिंग में नोट्स बनाने चाहिए। मैम, फॉर करंट अफेयर्स वी यूज विजन IAS मटेरियल इंस्टेड ऑफ द हिंदू, इट इज ओके। यस, विजन IAS मटेरियल इज वेरी नाइस, वेरी गुड, बट at the same time no notes can replace the insight and the kind of understanding that you get from a newspaper. So you should not skip newspaper. Maybe glance through, maybe just read a little bit here and there, but read newspapers. क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो न्यूज़पेपर बना रहा है और न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहा है, उसका अपना एक आइडियोलॉजी है, वो किसी ना किसी चीज़ को स्किप कर देगा, हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए। नोट्स ऑनलाइन बैचेस के लिए हार्ड कॉपी में अवेलेबल करवा दीजिएगा या सिर्फ ई नोट्स अवेलेबल रहेंगे? मैम, दोनों में अवेलेबल रहेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इफ आई टेक एडमिशन इन BA, yes, you will be eligible to give prelims in final year. Time management is very important in mains examination hall. You have to manage your time really well. How to make notes for ethics paper? First read it, then read it again, then read it again, then make notes, whatever book you are referring. How to write introduction, body and conclusion? It demands a separate video in itself, but if we think about it, introduction means that we have to introduce something. आपको बताना है क्या? क्वेश्चन समझ आ गया आपको, एग्जामिनर को क्या पता चलना है? हुक है ये, इंट्रोडक्शन में हुक कहते हैं इसे, यानी कि एग्जामिनर को आपने बता दिया, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे टोन एंड टोनालिटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गया, मुझे इसका आंसर पता है। इसके अंदर हम वो डेटा यूज़ करते हैं, वो वर्ड्स या वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो ये इंडिकेट करें कि हमें क्वेश्चन पता है और हम आगे लगभग क्या लिखने वाले हैं। बॉडी इज़ द डिटेल्ड पार्ट, जहाँ पे हम डिटेल्स, आर्ग्यूमेंट्स, साइड्स, क्रिटिसिज्म, पॉइंट्स इन सपोर्ट, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, जो भी चीज़ें हमें लिखनी है वो सब हम बॉडी में लिखेंगे। कंक्लूजन इज लाइक जब हम इस सारे इंट्रोडक्शन और बॉडी के बाद किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं या किसी एक वर्डिक्ट पे पहुंचते हैं कि यस, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, दिस इज द वे फॉरवर्ड, so that is nearly conclusion. But now this is very generic that I have told you. Each body, introduction and conclusion will depend on the question. There are various types of question which demand particular type of introduction and conclusion, so we cannot mark it as generically, but yes, for the benefit of the people here, just for the introduction I have told that it has to be very, very concretized. Ma'am, when you come to Hyderabad? I will be coming to Hyderabad soon. Yes, a student of open learning program can also become a civil servant. If your graduation is UGC certified, you can become civil servant. That's not a problem. I think that's it. Are there any more questions which are related to mains? I'm getting problem in introduction only. Introduction is a tricky part which generally people struggle with, but understand it like a story. So जनरली जब आप एक अच्छी स्टोरी सुनते हैं तो वो जो स्टोरी है वो बताती है ना कैरेक्टर्स क्या हैं हमारे उस कहानी के। एक राम है, एक सीता है, दोनों वहाँ रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, उनका राजवन, तो एक कहानी के तौर पे एक इंट्रोडक्शन मिलता है हमें, फिर पूरी कहानी मिलती है और उसके बाद एक वर्डिक्ट सा मिलता है। तो लगभग आंसर को उसी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें सिंपल तरीके से, तो वैसा ही आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। What are the common mistakes that civil servants, aspirants do while preparing for UPSC? Many mistakes. First, running after notes and notes only. Secondly,
getting confused how to prepare, where to prepare, all of this confusion leads to FOMO, fear of missing out. You feel like, पता नहीं क्या miss हो गया हमारा. Third, not devoting time of self-study and practicing. Fourth, becoming too much influenced by random things. So, you have to be very strong in character and you have to chart your preparation. अपनी preparation handle नहीं कर पाएंगे तो district कैसे handle कर पाएंगे? Lots of respect and love from Kashmir. Thank you, Z. Satyam Tiwari, yes, there is a essay course with us. ऑप्शनल कैसे चूज करें, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, बट अगर मुझे टाइम मिलते तो मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी. I will come to Bihar when some college or somebody invites me there. Okay, I think let's this is it. We will come again sometime for a live session. Thank you so much.